So hello my dear friends, today we are going to start a new topic, that is the conical pendulum. This is a very important topic, बहुत important topic है, 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में. सो देखो कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है. सिंपल, आपने पेंडुलम देखा होगा. सिंपल पेंडुलम यानी क्या होता है, देखो सपोज दिस इज अ बॉब. बॉब मीन्स एक पॉइंट मास, राइट. सी, so bob is moving like this, so bob is moving like this, it means this is a simple pendulum, right? So this is a simple pendulum, this is a simple pendulum. But sir, what do you mean by conical pendulum? So conical pendulum means if the bob is moving like this, this is a bob, this is a point mass means a bob. If bob is moving like this is the conical pendulum, right? This is a conical pendulum. While the bob is performing a circular motion, see, the bob is performing a circular motion. So we have to study the conical pendulum. So class, see, this is a rigid support. Sir, what do you mean by rigid support? Rigid support means after applying a force, the dimension of this is not change. Means सिंपल एक वॉल, एक सिंपल एक वॉल पकड़ लो, लाइक अ सीलिंग वॉल. ये हो गया रिजिड सपोर्ट. यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा देना. दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग. नाउ a string having a length L, a string having a length L. Now the bob is performing a circular motion. Bob is performing a circular motion, right? This is a conical pendulum. This is a conical pendulum. And R with the radius. R with the radius. Now see, the bob is performing a circular motion. Bob is performing circular motion. ये अच्छे से बना रहा हूँ मैं बस, ठीक है. नाउ सी व्हाट हैपेंड. दिस इज अ बॉब ऑफ मास कैपिटल स्मॉल m, राइट. जो बॉब है उसका मास कितना है, स्मॉल m. नाउ सर क्या होता है इसमें, देखो बताओ जरा. इसमें देखो बॉब यहाँ पे है, तो इसका मास कहाँ जाएगा, वेट इज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg व्हिच इज एक्टेड vertically downward direction, right? This is a very important force. Now so this is a string, डोरी है, ये रस्सी है. अब सर टेंशन एक्ट होगा भाई अपने हाथ में. अगर मैंने हाथ में ऐसा पेंडुलम घुमा रहा हूं मैं ऐसे, तो मेरे हाथ में एक फोर्स लेगा, वो फोर्स कहाँ रहेगा, टेंशन. सो टेंशन कहाँ एक्ट होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. एंड हियर इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. जहां पे पकड़ होती है वहां पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वहां पे पकड़ होती है वहां पे एक्ट होता है टेंशन. सो हियर इज द पकड़, इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो देखो टेंशन क्या एक्ट होगा, along the string. टेंशन क्या एक्ट होगा, along the string. बट सर टेंशन तो आपका ऐसा एक्ट हो रहा ऑब्लिक्यूली, और जब भी फिजिक्स में ऑब्लिक्यूली एक्ट होता है तो अपन उसके क्या गिराते हैं भाई, कंपोनेंट, क्योंकि बैलेंस करना होता है अपने को. सो टेंशन ऐसा जा रहा, मतलब एक फोर्स ऐसा जाएगा टेंशन का, राइट, और एक टेंशन ऐसा जाएगा, ठीक है. दिस इज एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा. इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. सो थीटा के एडजेसेंट वाला हमेशा बनता है t cos थीटा, एंड दिस इज अ t sin थीटा, राइट. दिस इज अ t cos थीटा एंड दिस इज अ t sin थीटा. These are the two components of the tension. Now see, the t cos theta is balanced by mg. So ऊपर वाला force is equals to the नीचे वाला force. That is the balance condition. So write down here balance condition. That is the t cos theta is balanced by mg. That is the equation number 1. And here is the t sin theta. So t sin theta is balanced by the centrifugal force, and the t sin theta is equals to centripetal force. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने बैलेंस करके रखा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह किसने लिखी है, t sin theta. So I can write that the t sin theta is equals to centripetal force, that is the mr omega square, right?
This is the equation number 2. Now divide 2 by 1, right? Divide 2 by 1. So 2 means t sin theta upon t cos theta is equals to n r omega square upon mg, right? Mm get cancel, tt get cancel. So we will get the value of the omega from this equation. So I can write like this. See, sin theta upon cos theta is equals to r upon g into omega square, right? So I can write the value of omega from this equation. So g upon r into sin theta into cos theta equals to omega square, right? So class, see here, r cos theta, see here, r cos theta and sin theta. So we have to replace this r, we have to replace this r. So how to replace this r? See, opposite side, theta ka opposite side, that is the r. So I have to use the sine ratio. See here, that is the sin theta is equals to opposite upon adjacent, opposite upon hypotenuse. See, sin theta equals to opposite means r and the hypotenuse means l. So r is equals to l sin theta. So replacement of r is equals to l sin theta. So instead of r I can write l sin theta. r की जगह आपने लिखना है l sin theta. So g, देखो भाई, r जहाँ है उसके जगह पे लिखना है आपने l sin theta. So write down l sin theta into cos theta into the sin theta, ऊपर जो था वैसे कैसे. Here is the omega square. Sin get cancel. So g upon l cos theta is equals to omega square. Write down. Now see here, we have to find the time periods. So we know that time period t is equals to 2 pi upon omega, right? So I can find the value of omega from here. Omega is equals to under root of g upon l cos theta. Okay, so put value here. So 2 pi upon value of omega under root of g upon l cos theta. This is the time period of a simple pendulum. This is the time period of a simple pendulum. So I can write like this also. 2 pi under root of L cos theta upon G. Right? This is the time period of a simple pendulum. Sir, cos theta को replace कर सकते हैं? हाँ. Is a theta here in this conical pendulum? Theta is a very small. If the theta is very small, so I can write cos theta is approximately equals to 1. So t is equals to 2 pi under root of L upon G. This is the expression for time period of a conical pendulum. Here L be the length of the string and G be the acceleration due to gravity. So write down it.